अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मायम न्यूज मधुपुर चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं मायम पार्टी के विधायक जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में। तेलंगाना विधानसभा के अंदर जिस तरह से उन्होंने औरंगजेब को लेकर, मुगल को लेकर और निजाम को लेकर जो लोग नफरत फैलाते हैं, नफरत की बात करते हैं, उन नफरती चिंटुओं को किस तरह से अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने जवाब दिया है और विधानसभा के अंदर पूरा हंगामा हो गया। भारतीय जनता पार्टी के विधायक टी राजा सिंह के सामने अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जो बात बोले हैं और विधानसभा के अंदर जो बवाल खड़ा हुआ है, क्या कुछ बोले हैं अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का, यह बयान हर किसी को सुनना चाहिए। And they are trying to do politics on religion, sir, and creating hate and hate and hate and only hate. सिर्फ नफरत नफरत नफरत। अभी हम सुबह में भी देखे कि किस तरीके से नाम के साथ से नफरत की जा रही है। अच्छा सर, ये क्या हमको नाम की फिक्र नहीं है, काम की फिक्र करनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन बाज ऐसे लोग हैं कि जो नाम की पॉलिटिक्स के जरिए काम की पॉलिटिक्स को भुलाना चाहते हैं। तो इसलिए मैं ये सारी तफसील बता रहा था कि कैसे उस्मानिया का नाम बदल दीजिए। सर, उस्मानिया का क्या है? सर, टुडे वी आर सिटिंग इन दिस हाउस, ये असेंबली भी जो बोल रहे हैं उनका नाम बदलो। ये हाउस भी वही निजाम बना इसमें, निजाम शुगर फैक्ट्री, सर सिरपुर कागज नगर, निजाम सागर, नागार्जुना सागर का सर्वे भी निजामिज करवाए। चाइना से वॉर हुआ तो गोल्ड टनों में लारी भर के देने वाले निजाम, प्रमुख निजाम। मगर ये जो नफरत जो करते हैं ना सर, वी हैव टू डिफीट दिस पीपल who are dividing this nation, I would say. That is why I was going in, sir. Reservation I will just conclude it. छोटा कर देता हूँ, सब तफसील में नहीं जाता हूँ। और कई मुद्दों को लेकर और आगे सुने वीडियो में क्या बोलते हैं एहतराम करते हुए। सर, रिजर्वेशन इन लोकल बॉडीज के लिए भी मैं यही बात कहूंगा सर कि the Congress has committed to raise the reservation in the local bodies to 42% for the BCs, 18% for SCs and 12% for STs according to its BC and SC declaration, sir. The existing declaration for SCs and STs in local bodies, sir. I'm sure the rising the BC reservation to 42 in the local bodies may not be a big deal at all, since the provisions are made in Telangana Panchayat Raj Act 2018 for earmarking 34% of reservation for BCs in Gram Panchayat, MPTC and ZPTC and Mandal Praja Parishad and Zilla Parishad, apart from reservation for SCs and STs, sir. Sir, also, sir, as per the GHMC Act, also 1/3 reservation are provided for BCs, sir. Sir, I welcome the decision of the government to raise the quantum of reservation for BCs in all local bodies, Panchayat Raj and urban local bodies. 42% in the proportion of BCs to total population has been assessed by 56.33% as per the caste survey, sir. This is the only way to do justice to BCs and empower them politically in the real sense, sir. Sir, at the same time, sir, while constituting the dedicated commission in November 2024, the government has directed the commission to make its recommendation by following the triple test prescribed by the Supreme Court of India as per prerequisite of provisioning reservation in favor of BCs, OBCs, local bodies election. Filed in order in Vikas Krishan Rao Gawali versus Maharashtra and other writ petition number 980 and 2019 dated 4/3, sir, 2021, read by D. Krishna Kumar and others, sir. The third condition in the triple test specifies that such reservation shall not exceed aggregate of 50% of the total seats reserved in favor of SC, ST, OBC and together. This directive to the dedicated commission was preposterous, self-contradictory and uncalled for asserted reasons, sir. This is why I'm once again repeating this, sir. So the reservation for BCs in other states, sir, I just need a little bit of time. इस वजह से सर कि earlier I had said that कि few people are trying to divide and create the hate between two communities and do their politics on religion, sir, by making two communities fight and creating a hatred. That is why I want to give some little bit of history, sir. Sir, out of the 36 states of union territories in the country, as many as 29 are currently implementing the reservation for backward classes, other backward classes, BC, OBC categories. The quantum of reservation for BC, OBC ranges from 2% to 50% in
different states and union territories. So the Tamil Nadu tops the list with 50% reservation for BC among 29 states and union territories, sir. The next are Kerala and Sikkim with 40% reservation for each for BC OBCs, followed by Andaman Islands 38%, Puducherry 34, Bihar 33, Karnataka and Maharashtra 32, each Andhra Pradesh and Telangana 29 each, Assam, Goa, Gujarat, Uttar Pradesh, Chhattisgarh, Dadra and Delhi 27, each Haryana 23, Rajasthan 21, Himachal 20%, Manipur, West Bengal 17, each Chhattisgarh, Jharkhand, Maharashtra, Madhya Pradesh and Uttarakhand 14% each, Punjab 12%, Odisha 11%, Tripura 2%, 7 states of Union Territory, namely Arunachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Ladakh, Lakshadweep, Meghalaya, Mizoram and Nagaland do not provide any reservation for BCs, OBC as they have no population of these sections, sir. Thus the hike in BC reservation to 42% in Telangana compares favorably with 50% in Tamil Nadu and 40% in Kerala and 38% in Andaman and Nicobar Islands, sir. States with 50% reservation for SC, STs and BC together are, as per the current status of the reservation in different states, as many as dozen state and union territories have already crossed. Dozens, sir, have already crossed 50% mark. These states include Tamil Nadu 69%, Chhattisgarh 59%, Karnataka 56%, Manipur and Rajasthan and Telangana 54%, each Maharashtra 53%, as well as Arunachal Pradesh, Meghalaya, Mizoram, Nagaland 80% each, and Sikkim is 85%, sir. The total reservation 100% in union territories of Lakshadweep, sir. No Lakshman Rekha or ceiling on reservation, sir. So there is no sanctity of Lakshman Rekha drawn by the Supreme Court on the quantum of reservation or at 50% bearing exception circumstances backed up by empirical data, sir. Nowhere that the Constitution of India lays down that a reservation shall not exceed 50%. The Supreme Court has merely laid down the cap which cannot be construed as a law, since only the Parliament has the powers to make legislation and the apex court job is only to see whether there is an conformity with the Constitution, sir. So in this backdrop, I would like to point out that the ceiling placed by the Supreme Court lacks statutory backing, as there is no provision in the Constitution of India placing a cap on the quantum of reservation for SC, STs and OBC. तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना एमआईएम पार्टी के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी साहब तेलंगाना विधानसभा के अंदर किस तरह से उन लोगों को जवाब दिया जो लोग नफरत फैला रहे हैं नाम के ऊपर। जिस तरह से पूरे मुल्क के अंदर माहौल खराब है, उस बीच असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने इस तरह से तेलंगाना विधानसभा के अंदर अपनी बात को रखी और कई मुद्दों को लेकर स्पीकर के सामने जो बात बोले हैं, आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें।